Welcome to my channel. This is me Fatima Khan here and you are watching Fine Color with Fatima Khan. In today's video I am going to paint some red tulip flowers. और ये पहली बार होगा कि मैं कोई फ्लावर पेंट करने जा रही हूँ because I am more towards the sceneries. So right now I am preparing my background. उसके लिए मुझे चाहिए सेंटर में ब्राइट हो और साइड्स पे डार्क. तो मैंने ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लिया सिंपल, और उसके लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ब्लैक जेस्टो अप्लाई किया था अपनी कैनवस पे. दिस इज़ नॉट अ कैनवस एक्चुअली, दिस इज़ माई स्केच बुक और मैं इसी पे पेंट करने वाली हूँ. तो कैनवस हो, स्केच बुक हो या वट एवर कोई भी चीज़ हो, दिस इज़ अप टू यू. लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं किसी भी मीडियम पे पेंट करूँ, उसको पहले मैं जेस्टो अप्लाई करूँ बिकॉज इट मेक्स सो मच ईजियर टू पेंट ओवर जेस्टो. सो मेरा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने फ्लावर्स. दिस इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय अनदर पेंटर जो कि ऑयल पेंट से पेंट करती हैं, और शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर इन लॉ. और उनकी पेंटिंग देखने के बाद आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू रीपेंट. एंड आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि मैं अलग अलग कलर्स यूज़ करूँ फ्लावर्स के लिए या फिर एक ही कलर के सारे. बट आई जस्ट रियलाइज कि मैं अगर सेम कलर के बनाऊँगी सो दिस वुड लुक मोर डिसेंट एंड ब्यूटीफुल. बिकॉज़ पहले ही मैंने इसका बैकग्राउंड 2 कलर से बनाया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना, तो दिस वॉज नॉट सो गुड फॉर मी. अच्छा, एक्रिलिक पेंट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो आप इसको क्लीन कर सकते हो. एंड आई यूजुअली यूज़ माई हैंड्स और नेल टू क्लीन बिकॉज किसी और चीज़ से ब्रश वगैरह से इतनी आसानी से होता नहीं है. यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई कैमरा पोजीशन बिकॉज आई रियलाइज्ड इट लेटर कि मुझे अपनी कैमरा पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए थी. But you can find it later in other flowers that how I am drawing my petals, my tulip flower petals. Because सारे flowers की techniques तो same होती है, तो बस कुछ छोटे बनाए, कुछ बड़े बनाए, कुछ की साइड चेंज की, कुछ की पोजीशन चेंज की, इसी तरीके से अदरवाइज टेक्निक सेम होती है. सो यू कैन फाइंड इट लेटर इन अदर फ्लावर्स बिकॉज और भी फ्लावर्स यहाँ पे मैं पेंट करने वाली हूँ लेटर. ट्यूलिप फ्लावर पेंट करने के लिए ये बिल्कुल बिगिनर्स का तरीका है जैसे मैं अभी कर रही हूँ. बट सबसे ईजीएस्ट जो वे है ना ट्यूलिप फ्लावर का, दैट इज़ द वन स्ट्रोक फ्लावर. वन स्ट्रोक के लिए प्रैक्टिस नीडेड होती है बहुत बहुत ज़्यादा. एंड आई एम गोइंग टू शो दिस टेक्निक इन माई अदर वीडियो टू. The most important thing in acrylic painting is layering. You should have to dry the first layer and then start the second. अगर आपने first layer को paint किया उसी के ऊपर second start कर दी, so you would have no idea कि किस तरीके से ये ख़राब और worst हो सकती है. because आपकी पूरी की पूरी मेहनत एक second में ज़ाया हो जाती है जब ऊपर वाला paint नीचे वाले के साथ mix up हो जाता है. और ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है. so I really know कि कितना दुख होता है. तो best is कि आप फर्स्ट लेयर लगाओ, लेट इट ड्राई, उसके बाद ट्राई टू डू अनदर लेयर. और लेयरिंग में काम करना एक्रिलिक पेंट्स में बेस्ट चीज़ है, और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन पेंटिंग आती है वो लेयरिंग से ही आती है, इन एक्रिलिक्स स्पेशली. After this red tulip flower painting, I am really looking forward to paint some more flowers and do some more flower paintings. And of course, I would share those with you also.
I really hope you enjoyed the video. Let me know in the comments below if you did. And yes, subscribe to my channel if you haven't yet, and thumbs up. Here I am done with my painting. I really hope you enjoyed my acrylic painting, actually tulip flower painting. And as I was first time trying to paint a flower. Until my next video, take very good care of yourself and Allah Hafiz.